आई होप कि समस्त आगु पढ़िछ ताहले ही मु तुमको रिवाइज करैबी आ कोडा कोडा इंपोर्टेंट तुमको बस कहबी कोन कोन इंपोर्टेंट आ माने कोन तुमको छाड़ियार अछि मेनली दैट इज इंपोर्टेंट ओके काने बही होछि पाखा पाखी 1000 पेज रो कि 1200 पेज रो बही तुमको जानियार अछि जे को चैप्टर इंपोर्टेंट से भितरे भी कोनटा इंपोर्टेंट कोड क्वेश्चन आछ हला नहले हमको लागे कारण पॉलिटी जो बहुत वास्ट हमको लागिवो कि प्रति लाइन रे क्वेश्चन अछि प्रति लाइन इंपोर्टेंट प्रति लाइन रे किछ ना किछ कांसेप्ट अछि बट सब क्वेश्चन आसेनी तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन देखियो तो हम टेस्ट सीरीज भी आनिबो ना एटी बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मु देइनी कारण टाइम रो भी कांस्टेंट अछि आउट दिन हम कहूची मैक्स टू मैक्स क्लास 2 घंटा रो फर्स्ट क्लास एकदम थिला तो बहुत डिले हे गला एते समय गले तमरो भी पेशेंस रहबोनी मोर भी पेशेंस रहबोनी ओके तो हम ट्राई करिया 1.5 आवर भीतर सारिया पई नेक्स्ट हाफ एन आवर होची डाउट्स क्वेश्चन आंसर ओके हाउ इजी जे क्वेश्चन हम तुमको माने मु तुमको एट दोची और डिफिकल्ट लेवल राउट के क्वेश्चन जतरा हमर टेस्ट सीरीज आसीबो सेतिर हम आनी ओके कारण इतनी क्वेश्चन नाही गोटे गोटे चैप्टर तुमको 20 30 लाख क्वेश्चन मिलिबो जतरा क्वेश्चन आसीबो टेस्ट सीरीज सेतिर तुमको और बहुत सारा नोन क्वेश्चन मिलिबो यूपीएससी रे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जहां भी चैप्टर पचराई छी सब तुमको रिवाइज कराई छी एबे भी जहां मु क्वेश्चन दोची सब यूपीएससी रो but they are in easier side एते भी टफ नहीं टिके easier side because तुम पढ़े लिया जब एकदम टफ क्वेश्चन पचारी ना इट्स इम्पॉसिबल मु भी आंसर कर परिबी से तम सिचुएशन में ओके तो आउ डिले करिया नहीं जे जॉइन करियो हम स्टार्ट करिया ठीक अछि समस्त बही रखिछ बाहर कलो चैप्टर ओके लेट्स स्टार्ट आज करिया हमें फंडामेंटल राइट दिन हमें कोन करथिले सेलिएंट फीचर्स करथिले आउ प्रीएम्बल करथिले ओके तारो भी 2-3 क्वेश्चन मु आउथर रखि छी लास्ट को ताकि तमर सारे रिकॉल हे जिवो आ जाकु जदी मु मझरे तुमको पचारले किछि डाउट देन रेज करिवो अदरवाइज लास्ट को डिस्कस करिया ओके केवल एकदम इंपोर्टेंट हम देखि जिवा नॉट एवरीथिंग मु तुमको कोन स्किप करिया अछि कहि देबी ओके सेडा तुम गोटर जस्ट गो थ्रू हबो बट ताकि किछि मन रखिया त जरूरी नै एंड हाइलाइट करो या तो पेन धरछो जे मार्क करो जा जा मुडे हाइलाइट करि छी ओके दैट इज एनफ इन दिस चैप्टर हला ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट होची फंडामेंटल राइट्स हमर को पार्ट रो अछि पार्ट 3 हला पार्ट 3 रो होची हमर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल केते रो केते 12 टू 35 एडा मन रखिया दरकार नै बट यू शुड रिमेंबर कि ए भीतर अछि कारण ए भीतर पर्टिकुलर आर्टिकल पचरांती ओके आर्टिकल न दे भी तार प्रोविजन कि एडा को ब्रैकेट रो अछि को लार्जर लाइक राइट टू इक्वालिटी अछि ता भीतर चारटा आर्टिकल अछि तो पर्टिकुलरली गोटे देइतो सेटा को ब्रैकेट रो अछि ब्रॉडली को फंडामेंटल राइट्स रो अछि इंडिया क्वेश्चन अछि ओके आउ कोड आछि एटा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस ओके बिल ऑफ राइट्स रो नै छोटा डायरेक्टली क्वेश्चन तमर हे परिबो आ क्वेश्चन पढि छी ओके या को हम कहंती मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके मैग्ना कार्टा कमे जेतले हमें हमरो ब्रिटेन रो कॉन्स्टिट्यूशन आस्थिला देयर दे हैव यूज्ड दिस वर्ड ओके द इंपोर्टेंट पार्ट सेडो कोन मैग्ना कार्टा जेतले हमें कहउतली मैग्ना कार्टा बिकॉज़ इट इज द वन ऑफ द मोस्ट important part of our constitution okay now hame jemti padithile ki preamble which is non justiciable okay fundamental rights is justiciable mane kono if somebody violates fundamental rights you can go to court okay preamble le kono somebody is not following somebody has violated you cannot go to court and file a case but in case of fundamental rights if somebody has violated your fundamental right then you can go and file a case okay in certain case in all the fundamental rights if state violates you can go to court in some fundamental rights if some individual is also violating still you can go to court okay hame dekhiya hoda koda then fundamental rights to kono mane taro kono broadly objective ki it ensures political democracy okay hame sedon dekhitile ki dpsp ensures what social and economic democracy okay fundamental right ensures political democracy okay man tamar political power what kind of like tamar voting rights like tamar man any kind of political rights okay that it protects and ye kon kare it mainly
ये स्टेट को प्रिवेंट करे टू बीइंग ऑथोरिटेरियन, okay, and bring arbitrary rules against citizens. So fundamental rights are mainly against the state and in favor of citizens. Okay, you, if somebody is doing this, the fundamental right is telling state cannot being arbitrary or authoritarian law to restrict somebody's right which are fundamental to his life. Okay, so broadly if you see, fundamental rights are against the state and in favor of citizens. DPSPs are opposite. It's not against state, people, but DPSP is telling to the state to do something. Fundamental rights are telling to the state what not to do. Okay, तो ये देखियो तो हमें भी देची कि एक क्वेश्चन आसे कि it establish, it prevents the establishment of authoritarian and despotic rule in a country. It protects the liberties and freedom of people against the invasion of the state. Okay. Otherwise, if there is no fundamental right, एमिति पूछो, जदि fundamental right न थांता, then state can do anything, state can bring any kind of law, okay, and violate our rights. So ये जिनसो fundamental right कराइची, ताकि state cannot do certain things. State cannot stop my freedom of expression. State cannot discriminate in terms of religion, race, caste, and all these things. Okay, so these are mostly restrictions to the state. State means government. Okay, they are a limitation on the tyranny of the executive. Executive means, you know, for executive are ministers. Okay, the government per se. So they are a limitation on the government or the executive and arbitrary laws of the legislation. Law की बनोची parliament. Okay, legislation. So এটা ଗୋଟେ limitation का ऊपर executive और legislature ऊपर. Okay, executive cannot bring arbitrary rules regulations. Legislature cannot formulate arbitrary laws against the citizens. Okay, and they aim to establish a government of law and not of men. Okay, ता माने कोन? Government should run by laws, not by men. माने मु धर अछि धर I am a minister. Okay, I cannot do whatever I want. I can only do what law permits me to do. Okay, there must be certain laws. I should act in the frame of that law. I cannot, because I am a minister, I cannot do whatever I want. Okay, that is the meaning. It establishes a government of law and not of men. Understood? Then fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the constitutions. Okay, fundamental rights are guaranteed and protected by the constitutions, but they are defended by Supreme Court. Because if your right is violated, where you go to Supreme Court. Okay, exclusively you go to Supreme Court. There are some rights you can go to High Court also, but exclusively you can go to Supreme Court without any appeal. Directly, the fundamental right violate hochi tame Supreme Court jai paribe. That's why Supreme Court is the defender of the fundamental rights. Okay. How fundamental ko hochi? Eso meaning bujo, because they are most essential for the all-round development of the individual. Individual all-round development they are most essential. So this rights tam hate deba, then our development is not, it will not be proper. Okay, anybody can come and put restrictions in our development. That's why they are fundamental. That's why they are called as fundamental. Okay, there are 7 categories of fundamental rights broadly. Okay, जोड़ा के हम detail देखिवा. Equality, freedom, okay, against exploitation of religion, educational rights and cultural rights. एटा को हम हटे देछंदी. Okay, originally 7टा थिला, एटा को मन रखो. Originally थिला 7टा, एबे अछि 6टा. आउट होछि constitutional remedy. Okay, we'll see one by one. एटा को कोर्ट रखा है, सेटा भी हम देखिवा. केबे हटाला सेटा भी देखिवा. आर स्टेटस भी कोन सेटा भी देखिवा. So there are 6 fundamental rights. Okay, the right to property जोटा थिला fundamental right तब केबे हटाइछि, ताको हटाइछि 44th amendment act द मंडप. Okay, there is lot of confusion between 42nd and 44th. Okay, 42nd रे बहुत सारा नेगेटिव काम कराइछि because of this emergency rule, you know. जो जिंसो वाडा सब 42nd रे कराइछला सेडो को पुनी रिवर्स कराइछि 44 रे. बहुत सारा ऑटोमेटिक अमेंडमेंट है. तो 42nd रे को हटाइनि तो मन रखो 44th. Okay, 44th amendment ताको एबे कोड रखा है कि आर्टिकल 100 and आर्टिकल 300A. Okay, अब यार स्टेटस कोन बे, इट इज ए लीगल राइट.
it is not a fundamental right. So right to property is a legal right. It is under Article 300A. That was 44th Amendment Act 1978. Okay. Then feature कौन? Okay, किछटा fundamental right हमर अच्छी only for citizens. Okay, आउ कितना अच्छी for citizens and for foreigners and other legal persons and companies वगैरह वगैरह. Okay, तो देखियो हमें कोड़ा अच्छी तमे कोड़ा citizen पाए केवल अच्छी मन रखले जान दो जे बाकी कोड़ा सब समस्त में अच्छी. Okay, so आउ गोटे तार कौन feature कि they are not absolute. हम जानि छ काली भी हमें देख माने फर्स्ट क्लास रे हम देखिथिले. They are not absolute, there are restrictions. Okay, freedom of speech doesn't mean, for example, freedom of speech doesn't mean I can stand and speak anything that I want. Okay, I can stand and speak against my country, I can stand and speak against my the plural nature of our country. That is not permissible. Okay, so there are reasonable restrictions. Okay, and who decides what are reasonable restrictions? It is by courts. Okay, court कहबो जे reasonable restriction कौन. Our reasonable restriction कौन में रखा है? Balance between individual liberty and social control. Okay, हमर भी liberty रहियार अछि, but society रे भी chaos न होवार अछि. हमें एमिति कथा कहबा जोडा कि society रे बहुत सारा problem create कर दबो. Okay, so that is also not good, you know. तेणु हमर individual liberty भी रहियार अछि, society रे proper control भी रहियार अछि. Okay, सेति पे ये balance बनाइ छी, reasonable restriction रखाइ छी. Because ମୁଁ तुमको starting रे कहली, all the fundamental rights are against the arbitrary action of the state. Okay, state कौन करि न पारिबो से होची fundamental rights और all the provision तुम देखिबो state या करि पारिबोनी, state equal treat करि पारिबोनी, state discriminate करि पारिबोनी, state untouchability को promote करि पारिबोनी, state cannot what restrict our religious rights, freedom of religion. So what a fundamental right is against the arbitrary action of the state. But किछिटा fundamental rights अच्छे, they are available against the action of the private individual also. For example, untouchability. Okay. I cannot practice untouchability against you. Okay, this is your fundamental right. If I practice against that also, you can go to court. Okay, so in terms of this, it is against a private individual also. बुझपारलो? Then they are negative in character because they are telling what state should not do. Okay, कौन स्टेट करि परिबो नाही या तो तुम बुझो जे कंट्री या तो गवर्नमेंट कौन करि परिबो नाही से कुछ फंडामेंटल राइट तेनो से नेगेटिव कैरेक्टर रो. ओके, while some are in positive character. For example, right to life. Okay, and liberty. This is positive character. How I should live my life. Okay, how my personal liberty should be ensured. It is positive character. State cannot discriminate. It is negative character. Okay, then they are justiciable. If violate, then you can go to court. Defended and guaranteed by the Supreme Court. Okay, then they are not sacrosanct or permanent. They can be amended. Okay, they can be amended by any amendment act. Right to property or okay, amendment करेगी. But right to privacy add है Article 21 रे, right to sleep add है. इंडिया बहुत सारा right हम add करी जाऊ चन. So they are not sacrosanct or permanent. They can be, you can add or what repeal. Okay, जब right to property को बाहर कराई छी, privacy, sleep, और बहुत सारा right हम add करी जाऊ चन. Right to marriage. Okay, now it is a fundamental right. Then they can be suspended. Okay, during national emergency. Okay, except Article 20 and 21, all the fundamental rights can be suspended. They cannot be eliminated. माने तमे भाबो जे emergency time रे still तमरो fundamental right अछि, but its action is suspended. That means at that time if somebody violates your fundamental right, you cannot go and challenge that in court. You still enjoy the fundamental right, but its execution is suspended. That means तमे जदि तमरो fundamental right violate होछि तमे सेटले जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करि परिबो नाही. Okay, except Article 20 and 21. 20 कोन हम देखिया, 21 कोन भी देखिया. ए दीटा मन रखो, ए दीटा को छाडी की बाकी सब को तमे सस्पेंड करि परिबो. आ Article 19 को तमे सस्पेंड करि परिबो when the emergency is because of external aggression or war.
ओके ए दुईटा ग्राउंड रे जदी इमरजेंसी लागि छी देन तमे आर्टिकल 9 को भी सस्पेंड करि परिबो ओके हु विल सस्पेंड प्रेसिडेंट ओके देन there are some restrictions okay एडा किते एते किछ इंपोर्टेंट नै या ऊपर केबे भी क्वेश्चन आसीनी फॉर आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिटरी ओके ताको मानन पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं because they are in certain restriction they are dealing with national security वगैरह ओके तेनु तांको फंडामेंटल राइट टू स्पीच वगैरह दिया ही नहीं तांग में किछ रेस्ट्रिक्शन अछि पुलिस फोर्स वगैरह इंटेलिजेंस वगैरह ओके नॉले गोटे पुलिस आसी कि गोटे केस विषय से धर फॉर एग्जांपल डील करू सी आसी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अछि कि तार सब डिटेल बाहर कहि दो माने नहीं तो से मानन पे किछ रेस्ट्रिक्शन कराई छै आर्म फोर्सेस साथे देशर सिक्योरिटी अछि तांगे आसी सब कुछ कहि देबे बाहर एंड दैट इज द प्रॉब्लम तो लॉजिक लगे कि मन रखियो जे एटा केबे एते इंपोर्टेंट नाही बट स्टिल यू कैन लॉजिक लगे तमे मन रख परिबो ओके एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड व्हेन देयर इज ए मार्शल लॉ मींस व्हेन देयर इज ए आर्म्ड फोर्स मिलिटरी रूल ओके जेमति फॉर एग्जांपल यू जस्ट रिमेंबर कि मणिपुर रे बेहितला मणिपुर रे बिजल केस हला सेठी बहुत सारा हमर आसपास लागुची नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह रे ओके जोडे जोडे आस्ट्रा स्पैम लगो चंदी ना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ओके एएफएसपीए जोडे जोडे लगो चंदी सेठी कोन गुरजी ना किछि किछि लोक मानकर राइट्स रेस्ट्रिक्ट कराई होची ओके यू कैन नॉट मूव विथ आर्म्स वगैरह ओके तो किछि किछि रेस्ट्रिक्शन हमें लगो चंदी तो सेठी भी फंडामेंटल राइट हमें रेस्ट्रिक्ट करू चंदी then most of them are एटा तो जानिछो most of them are directly enforceable आउ किछरा पे हम एक्ट बनै छन ओके लाइक अनटचेबिलिटी पे हमर एक्ट बनि छी सिविल लिबर्टीज एक्ट like if somebody practices untouchability he will be punished under this act okay how for example directly enforceable kono for say state cannot discriminate in terms of religion sex okay place of birth वगैरह तापे कुछ रूल नहीं directly it is applicable whenever state formulates any rules or legislation it will practice तापे हम किसी extra law बनेना चाइल्ड लेबर हला हमरो चाइल्ड लेबर अछि गुड फंडामेंटल राइट रे derogatory practices against women हला इसो पे कोना एक्ट बनै छै एक्ट थ्रू रे तक हम एग्जीक्यूट करू छै तो किछिटा फंडामेंटल राइट दे आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल किछिटा we are doing it through certain acts okay and those acts are passed in parliament well the acts are passed in एटा गुड पॉइंट मन रखो such acts can be passed in parliament and not by state legislature okay कोन पे because parliament pass करले जोडा भी पास करिवो सेटा एंटायर कंट्री यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हबो स्टेट जदी पास करिवो देन सेटा ओनली से स्टेट पे एप्लीकेबल हबो अलगा स्टेट लोक सेटा एन्जॉय करूछन से राइट धर ओडिसा गोटे किछि एक्ट पास कर देला कि फंडामेंटल राइट को नै त हम ऊपर सेटा रेस्ट्रिक्शन हे गला बाकी स्टेट लोक एन्जॉय करूछन सेति में स्टेट को परमिशन दिया हैनी ओनली पार्लियामेंट कैन पास ओके so that it will be applicable in uniformity throughout the state then tomorrow एडा देखो इट्स इंपोर्टेंट नहीं स्टेट जो हमर पे स्टार्ट हला आर्टिकल शुरू हला आर्टिकल नंबर 12 फास्ट रे 12 डिफाइन कर जी व्हाट शुड बी ए स्टेट गुड स्टेट भीतर कोन कोन रहइबो हला सेतिर हमर इजी की सेंट्रल गवर्नमेंट रहइबो स्टेट गवर्नमेंट रहइबो थर्ड टियर गवर्नमेंट जो अछि म्युनिसिपैलिटी पंचायत से माने रहइबे प्लस जेति कि हमर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अछि ओके जोडा को हम कहउछन पीएसयू वगैरह पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओके से माने भी स्टेट रो डेफिनेशन अंडर आसीबी कारण एटा कोन में रखाई छी फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट तो तमे जदो कोर्ट को जीवो तमे सेदो कहबो जे ये मोर ए फंडामेंटल राइट को वायलेट करछि सेतलो देखाबो जे से ऑर्गनटा स्टेट रो डेफिनेशन भितर आसुछि कि नै इफ इट इज ए प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी then you cannot tell कि he has violated my fundamental rights okay certain fundamental rights are against private person also but largely it is against state सेतलो देखाबो जे ये जो जा अगेंस्ट तमे आनिछो से गोटे जो स्टेट रो डेफिनेशन अछि से भितर आसुछि कि नै ओके सेचमे स्टेट को डिफाइन कराई छी आर्टिकल 12 रे ओके एबे फॉर एग्जांपल इंफोसिस होजर कंपनी ओके तमे जे की केस कलो इंफोसिस मोर फंडामेंटल राइट को वायलेट कला then court will say Infosys is not coming under state
बट तुम ओएनजीसी रे काम करूछो तुम जे केस कलो देन ओएनजीसी कम्स अंडर स्टेट बिकॉज इट इज फंडेड एंड इट इज रेगुलेटेड बाय स्टेट इट इज ए पीएससी बुझलो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेवडा ही लिखा है then laws inconsistent with fundamental right okay if a law is inconsistent article 13 कहूची जदि तुम गोटे लॉ बनेला पार्लियामेंट गोटे लॉ बनेला जोडा कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करूची okay then that can be termed as null and void by the supreme court okay but there are certain हाँ कौन कहूछ सर से जो इनपुट कल से जो कथा पहले वॉइस क्लियर नहीं वॉइस सर हमरो स्टेट रो हेलो हाँ देखो हेलो हाँ को सर जो इन्फोसिस कथा कुछ तो हमको इन्फोसिस कथा से तम वॉइस एक्चुअली ब्रेक होची बहुत તમે टाइप कर पार हाँ टाइप कर दियो ओके टाइप करो नहले तुम क्वेश्चन रखी था लास्ट को जदी तुमरो डाउट अछि तुम लास्ट को पचारियो दैट विल बी बेटर ओके जदी नाही जदी तुम टाइप करो मु देखुची पढेला भितरे हला मु कहि देबी विल प्रोसीड हम आगु जीवा मु देखुची तुमरो क्वेश्चन आसले मु कहि देबी हला तो आर्टिकल 13 कोन कहूची कि जदी किछि भी लॉ बनेलो जोडा कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट हैला या तो तार प्रोविजन को वायलेट करूची देन दैट कैन बी टर्म्ड एज नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओके दैट विल कम अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू माने कोन जदी किछि भी तमर ए ऊपर भी क्वेश्चन अछि देखियो जुडिशियल रिव्यू रो माने होची जदी किछि भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनौची तमे जाय कि ताकू चैलेंज करूछो कोर्ट रे कि इट इज वायलेटिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन okay then supreme court will see whether the law or the act is violating the constitution or not that is called a judicial review judiciary will review your act whether the act is in line with the constitution or not okay that is called a judicial then सेडा हमर तुम जानि छो हमें आर्टिकल 32 जोडा छै हमर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ओके आर्टिकल 32 अंडर रे तमे चैलेंज करि परिबो फंडामेंटल राइट रो जो वायलेशन हला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रे आर्टिकल 226 रे तमे जाके हाई कोर्ट रे अपील करि परिबो इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड ओके देन I would think so constitutional amendment को तमे चैलेंज करि परिबो कि नहीं ओके whether you can challenge a constitutional amendment or not if it is violating the fundamental right supreme court केशवानंद भारती जजमेंट रे कोन कहै छी yes you can challenge a constitutional amendment also if it violates the basic structure of the constitution okay there are certain fundamental rights which are included in the basic structure okay if they are violated through a constitutional amendment so the government गोटे किछि अमेंडमेंट करी कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करछि जोटा कि फंडामेंटल राइट्स अंडर रे अछि देन दैट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपली बुझलो कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज करि हबो ओके इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स देन एटा तमे देखि दबो एडी ब्रॉडली अछि राइट ओडा एक्चुअली एति ही मन रखियार अछि हमें तो बुझिबा बोर्ड इंडिविजुअली बट ए टेबल नाही तुम जदी मन रखिलो ना बाय एंड लार्ज चैप्टर जहा क्वेश्चन अछि मोस्टली तांगे ऊपर ऊपर पचार जंदी से माने बहुत भीतर पचार ना ओके तुम मन रखियार अछि सिंपली राइट टू इक्वालिटी अंडर रे कोन कोन आर्टिकल अछि ओके तुम देखियो यूपीएससी रे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन अछि राइट टू इक्वालिटी अंडर रे हमर अछि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 15 अछि नो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओके 16 अछि हमरो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 17 अछि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 18 अछि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ओके एक्सेप्ट मिलिटरी एंड एकेडमिक्स सेमती ए अंडर कोन कोन अछि फ्रीडम राइट टू फ्रीडम अंडर रे ओके एवडा मन रखियो एमिति मन रखले मन रहबो इक्वालिटी पिला हमरो 14 रु 18 सेमती फ्रीडम अछि 19 रु 22 अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अछि 23 रु 23 एंड 24 ओके रिलीजन वाला अछि 25 रु 28 ओके देन हमरो
लास्ट अछि हमरो कोन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आई थिंक सेटा होछ 29 30 रेमेडी होछ हमरो 32 बस एति एमिति जदि मन रखियो ब्रैकेट रे देन तमन मन दबा इक्वालिटी एटा होछ फ्रीडम एटा होछ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हला ता भीतर तुम गोटे आर्टिकल मन रखियो आर्टिकल एटा मन रखियो पड़िबो ओके एटा प्रीलिम्स ପାଇଁ भी इंपोर्टेंट आ तमर मेंस ପାଇଁ भी इंपोर्टेंट तुम बहुत जगह रे आर्टिकल सब कोट करि परिबो राइट तो फ्रीडम अंडर कोन कोन अछि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन okay speech and expression hoche amara article 19 then protection of conviction for offenses adala article 20 eta man purchi article 20 kon thila even during emergency you cannot suspend okay right to life and liberty article 21 these also you cannot suspend these two article cannot be suspended at any condition okay this article goto hoche against your respect of conviction for offenses I would hoche right to life and liberty then ala amar elementary education ala 21a एडा को ऐड करा है सेट में 21a है कि अछि then 22 होची arrest and detention in certain cases okay protection against arrest and detention then amar hala traffic in human beings and forced labor 23 then prohibition of employment of children 24 then asla amar right to right against exploitation okay you cannot exploit this group okay trafficking and employment of children in factories are what are nothing but exploitation okay so this right is against exploitation then freedom of religion chitra achi article 25 okay to practice profess and what propagate then 26 hoche how can you manage your religious affairs then freedom from payment tame kagu force kari pariboni religious matter re tax deba pai okay tame fee collect kari paribo but not tax that is 27 then from attending freedom from attending religious instruction or worship in tame ko educational institution re kagu force kari pariboni particular religious kichi worship or kichi kariya pai okay these are in state mane government or institution okay aided by institutions jodi tamara nijor religious institution achi tal thik achi minority educational institutions they are exceptions then amaro 29 30 अछि कोन एजुकेशनल कल्चरल गोटे होची कल्चर पय गोटे एजुकेशन पय देखो एडा होची कल्चर पय प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज ओके दीज आर नथिंग बट रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देखिबा then minorities to establish and administer their own educational institutions एडा होची आर्टिकल 30 okay 31 is not important that is an exception okay where to mane fundamental right violate होतबो but DPSP को तुम जदि आणुछ then what should be the case that is in 31 not important 32 होची the most important among all the fundamental right is article 32 हला according to BR Ambedkar सेडा होची तमरो कोन गुजनागु रेमेडी माने तमरो जदि fundamental right violate होच then what you can do okay that itself is a fundamental right तबे हम देखिबा कि कोडा कोडा केवल इंडियन मानन पय कोडा कोडा बाकी समस्त पय जस्ट मन रखो कि पूराटा को मन रखि दो चारटा आर्टिकल अछि चारटा ना ए 1 2 3 4 5 पांचटा आर्टिकल अछि केवल इंडियन मानन पय हला आर्टिकल 15 no discrimination prohibition of discrimination you cannot discriminate okay on this basis eta komi rakhaini foreign manangar pai because there you can discriminate on the basis of place of birth okay state can discriminate on the basis of place of birth in terms of foreigners eta foreigner man ki aini kebol indian man ki ai 15 16 जोटा कि public employment हम तो बाहर देश लोक दे परियानी ani गाम देश चाकरी eta तंग में रखाइनी then article 19 okay हमें बाहर देश लोक को तो राइट दे परियन ना तो मैं किछि भी हम देश को होली राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा भी तंग में रखाइनी then एटा भूल देछि एटा होची article 29 और 30 okay जोटा कि हम रखितले एजुकेशन और कल्चर हमें आम कल्चर को प्रोटेक्ट कर परिया बाहर देश को लोक आसी हम देश को ता कल्चर को प्रोटेक्ट करो then we are not responsible okay and same thing with education so article 15 16 लिखि दियो साइड रे हला बोय रे आर्टिकल 15 16 19 29 30 these are exclusively for our citizens okay बाकी सब होची for our citizen and for foreigners also
then we start करवा we will just see briefly. Okay, first is right to article 14. Okay, right to equality. ये कौन पूछे? Equality before the law. Just remember the meaning, understand the meaning. Equality before the law and equal protection of law. कौन है यार meaning? एटा कोड practice करें परिवो. Okay, this law is within the territory of India. Okay, whether citizens or foreigners. हमें देखिले article 14 केवल इंडियन मानक में नथिला. इंडियन मानक में कौन थिला? 15 16 19 29 30 तार तो आर्टिकल 14 इंडियन मानक ପାଇଁ ବି ଅଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି. ओके, इधर दीटा कांसेप्ट अछि. गोटे होची इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गोटे होची इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ जोडा सेडा माने चंदी ब्रिटिश को. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोडा सेडा माने चंदी अमेरिका. ओके, फर्स्ट कांसेप्ट कोन होची इक्वालिटी बिफोर लॉ? The absence of special privilege in favor of any person. Okay, equality before law माने कहा पाई किसी भी स्पेशल प्रिविलेज रहइबो नाही. समस्ते इक्वल बिफोर द लॉ. ओके, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कोन? The equal subjugation of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. जेति कि आम देश रे नीति नियम अछि. Everybody should be equally subjected towards that ordinary law. Okay, we cannot discriminate between somebody is rich or poor or somebody is upper caste or lower caste. Based on that, we cannot project in front of any law. समस्ते जते हमर नीति नियम अछि ता सामने रे समस्त समान. ओके, थर्ड कंडीशन कोन? नो पर्सन इज अबव द लॉ. ओके, लॉ टू ऊपर किए भी नहीं. तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ रो तीनटा कंडीशन. गोटे होची कि कहा पई किसी स्पेशल प्रिविलेज नाही. सेकेंड होची समस्तंकु जति कि आम देश रे लॉ नीति नियम अछि इक्वली एवरीबॉडी इज सब्जेक्टेड टू दैट. थर्ड होची लॉ रो ऊपर किए भी नहीं. ओके, लॉ इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. एटा होची इक्वल बट इक्वालिटी बिफोर लॉ. सेकेंड टा कोन थिला हमर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कोन होची? The equality of treatment under equal circumstances, both in the privileges and liberties imposed by the law. Okay, means what? These jana jodi same type of crime korichandi, these jana jaku same danda milibo. Okay, equality of treatment under equal circumstances. If the circumstances are different, then we cannot treat both of them equally. Okay, only we can treat both of them equally if the circumstances are same. Means if the crime is same or if any action is same in similar circumstances, we can treat them in equal terms. Okay, second point kono? The similar application of the same law to all the persons who are similarly situated. Okay, for example तमे कहबो कि एबे जो राइट दिया होछि हमर रिजर्वेशन दिया होछि फॉर एग्जांपल वुमेन मान को रिजर्वेशन दियाला. तमे एटे कहि परिबोनी जे फंडामेंटल राइट वायलेट होछि उडे मेन रो. ओके, ए स्टेटमेंट तुम कोन कहछि? इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वली सिचुएटेड then you cannot treat them equally. Okay, सेति पे हम कोन कहछि? वुमेन आर they are not represented equally. Our ST SC, okay, OBCs, they are not situated equally with the other side, I mean other people in the society. That's why हम माने हुए रिजर्वेशन आंचन. सेति पे कोन होछि? से केस रे फंडामेंटल राइट वायलेट होउनी. Okay, so this statement is telling if both of them are not equally situated, you cannot treat them equally. Okay, third condition kono? The like should be treated alike without any discrimination. Okay, if two persons are same, then they should be treated as equal. They should be treated equally. Okay, without any discrimination. एडा होछि हमर कोन थिला? Equal protection of the law. माने सिंपली यार मीनिंग होछि law will protect everyone equally, but condition is that से लोक माने भी सब इक्वल सिचुएशन थिबा दरकार. जदि दिडा लोक इक्वल सिचुएशन में नाहंती तमे दि जण को इक्वली केमि प्रोटेक्ट करिवो? जणे ड्यू टू सम रीजन, सोशल रीजन और हिस्टोरिकल रीजन गोटे पर्टिकुलर वर्गर लोक पछरे पड़ी जाइछन, आ गोटे पर्टिकुलर वर्गर लोक तांके ऑलरेडी मेन स्ट्रीम रे मिस जाइछन.
तो तमे तांको इक्वली ट्रीट करि परिबोनी ना नहीं इक्वली प्रोटेक्ट करि परिबोनी तो जनकु तुमको किछि बेनिफिट दबाक पड़िबो ओके फॉर एग्जांपल हम जो रिजर्वेशन दोचन से वुमेन हो एससी एसटी हो माइनॉरिटी हो जाग भी ताको हमें दोचन सो दैट both the sector of the society will come to a similar footage सेति में सेठी हमर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन होनी अदरवाइज सेठी में हम कहि पार थांदे कि दिजन जब इक्वली ट्रीट कराउनी फंडामेंटल राइट रो वायलेशन हला ना नहीं सेडला में तुमको जस्ट बुझियार अछि एते भितरु क्वेश्चन आसुनी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके इफ देयर इज ए क्वेश्चन यू कैन आंसर इट then rule of law एटा विषय विषय जानियार नहीं जस्ट रूल ऑफ लॉ रो गोटे पार्ट होची इक्वालिटी बिफोर लॉ एति खाली जानो जे दिस कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ ओके रूल ऑफ लॉ माने कोन लॉ विल रूल not any person or any member or anybody will do law will rule okay देश का द्वारा चलिबो नीति नियम द्वारा चलिबो वो लोक द्वारा चलिबो प्रधानमंत्री जण हे गला कि जण प्रेसिडेंट हे गला से जहा कले से अनुसार देश चलिबो okay they have to make a law they have that should be passed by the parliament with majority that means what हमर एग्रीमेंट से लॉटा पास कराल हम एग्री करले माने कोन हमें जो रिप्रेजेंटेटिव माने को पार्लियामेंट को पठेछन से माने एग्री करले ओके तो देश लॉ द्वारा चलिबो नॉट बाय ए मैन और बाय एन इंडिविजुअल दैट इज नथिंग बट रूल ऑफ लॉ लॉ विल रूल तो तार किछडा मीनिंग कोन नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ देखो जदी ताकू माने तुम रिवर्स डायरेक्शन रे भाबो लॉ विल रूल रो माने कोन जदी लॉ रहइबन मु चाहिले मते ओड जिंस भल लागलेनी मु तुमको पनिश कर देबी आउ जने नेक्स्ट टाइम की आसला प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर की ताकू ओड जिंस भल लागलेनी से तुमको पनिश कर दो ओके लॉ विल रूल माने कोन I cannot punish you unless and until you violated a law. Okay, जदि तुम को law को violate करना, then कौन सी condition में मैं तुमको punish कर पारिबे नहीं. Only when I can punish you if you have violated any law. Okay, that is nothing but rule of law. And equality before law, तुम बुझिला. Okay, everybody is equal in the eyes of law. Then हमारा कौन की constitution is the result of rights of the individual okay हमें हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि एटा कोन हम लोक मानकर राइट्स हम लोक मानकर ड्यूटीज ओके ताकू माने गैदर करके कराई छ कॉन्स्टिट्यूशन ओके एंड वी ड्रॉ द राइट्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशन रो जा ड्रॉ करू छु जे व्हाटएवर आर राइट्स इसमें लिखा है इन इंडियन सिस्टम Constitution is the source of individual rights. This statement also you have to remember. कि Constitution होचे हमर rights रो source. हमें कोर्ट जानू छ हमर rights कोन कोर्ट ड्रॉ करू छु Constitution. जेतला तमे चैलेंज करू छु सुप्रीम कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट का रेफर करू छी Constitution. Okay, Constitution is the source. Then rule of law is embodied in the Article 14 and I remember this rule of law Article 14 this is a basic structure okay basic feature you cannot change it or you cannot repeal it or take it away by any constitutional amendment actually anything can be taken away from the constitution by a constitutional amendment except basic features okay basic feature को तुमने कौनसी वेरे भी कॉन्स्टिट्यूशन रे हटै परिबो नाही बाय एनी अमेंडमेंट तो आर्टिकल 14 होची जे थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक ओके दिस एक्सेप्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड एति कि तुम बुझले आर्टिकल 14 रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन आसो